morning, my dear guys. आज आप माने close to English poem the Ballad of Father Gilligan आमे देखिबा. Ballad कौन? Ballad is a long narrative poem which consisting of 14 lines. Ballad गोटे poem जोटा के 14टा लाइन को नेकी गठित होई थाए. फर्स्ट 8टा लाइन को octave कहा जाए एवं तार नेक्स्ट 6टा लाइन को कोन कहा जाए sextet कहा जाए. एठारे आमे देखिबा फादर गिलिगान होचंती गोटे प्रिस्ट. से जाय हमने डायरेक्ट आमे पोएम कासीबा. तुम माने कौन करिवो आंसर को तबे सुनिबो एवं लिखिबो. ओके टाइम होय तो कम हेबो. हम परीक्षा अनुसार हम डिस्कशन करिबा. द ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगान वृद्ध जाजक प्रिस्ट माने जाजक पीटर गिलिगान होचंते वृद्ध जाजक वाज वेरी नाइट एंड डे. से दिन राति कोन थिले से व्यग्र थिले. वेरी माने कोन थिले? वेरी माने व्यग्र. ओके he was restless व्यग्र थिले. फोर माने इटे कोन कारण. फोर माने कोन कारण जो बिकॉज. ओके कारण half his folk were in their beds. अधा तांकर लोक माने कोन रोग सज्जा थिले और अंडर ग्रीन सूट्स ले आ केते जण समाधि रे थिले. ओके केते माने अधा लोक ए प्रकार गुटे संक्रामक रोग आसी जायछि बा गुटे रोग आसी जायछि. संक्रामक तो रोग न ए प्रकार गुटे कोन परिवेश आसी जायछि रोग आसी जायछि epidemic आसी जायछि नै गोटे संक्रामक रोग हेथिबो. इट माइट बी एन epidemic या गोटे संक्रामक रोग हेथिबो जे अधा लोक कोन होचंते बेड रे अछंते आ अधा लोक मरि सारिलेनी समाधि रे अछंते. नाउ द क्वेश्चन व्हाई पीटर गिलिगन वाज worried? Why Peter Gilligan was worried? Old Peter Gilligan was worried because half of his the people were affected by some disease and large number of people were dying. Okay, large number of people were dying and somewhere in the sick bed to attend them. As a priest, he had to attend them. से जाजक हिसाब से मानको पाखको रोगी मानको पाखको जाईकी से मानको पाखर जाईकी प्रायर करिबा प्रार्थना करिबा से मानको देखिबा इत्यादि तांकर दायित्व. ताकू प्रार्थना करिबा पय मध्ये केते लोक माने ताकू कोन करथि डाकंती मध्ये. तेनु as a priest he had to attend them. Okay, why he was worried? Because the large number of his people from his congregation they were affected with some disease. They were sick and another number or the large number of his people who were already died. So this is the situation. Why he was worried? Because the people were affected with some disease or they were sick. Okay. Once why he nodded on a chair dine se kon hochonti chair bosi kon hochonti nuding माने एंटी मुंडो हले नुडिंग बोली कहंती. ओके से चेयर बसी केमती मुंडो ढुंकरो छंती एटा त मूत आवर ऑफ इवनिंग बा कीटपतंगर समय संध्या जते से ढुंकरो छंती. another poor man sent for him. आप जने गरीब लोक ताकू डकाई पठाइले and he began to grieve. आ डकाई पठाया परे से निजे कोन माने कहउछंती I have no rest nor joy nor peace. आ से कहउछंती मोर विश्राम नाही कि शांति नाही कि आनंद नाही बोली से कहउछंती. बिकॉज़ एटा सुचोजी कोन why he grieved. से काहे के माने ए प्रकार अभियोग करछंती माने ए प्रकार काहे के होछंती. बिकॉज़ से तांकर रेस्ट नथिला आनंद. why Peter Gilligan is saying that I have no rest nor joy nor peace? Because he was taking rest out of his tired. He was taking rest sitting on the chair. He was nodding at that right time. ठीक सही समय जते बेले विश्राम लेउछंते से समय आउ जन तांको कहि पठौछंते पीटर गिलिगन यू प्लीज कम टू माय हाउस आई हैव अ प्रॉब्लम. ए प्रकार नहीं से माइट बी से कोन कहउछंते एई अवस्था रे से जते बेले आउ जन पूर में ताको डकाई पठाइले कोन ही से कोन होउछंते ही grieved. Why Peter Gilligan grieved? Because Peter Gilligan grieved because he was overtired. Because he had no rest. Why he had no rest? Overtired वाला में लिखिबा. Because he was overtired. Okay, he was overtired वाला में लिखिबा. अब why he says he has no rest, no joy, no peace? Because since his large number of his congregation, the people, they already
large number of these people already died, and another large number of people, they were on the sick bed. On the sick bed. So in this condition, in sick bed, in this condition, Peter Gilligan is telling that I have no rest, nor joy, nor peace. For people die and die. कारण for माने लोक माने केवल मरी ही जाउछन्ति. And after cried he, God forgive my body spake, not I. अर्थात ଯେତେବେଳେ another poor man ତାକୁ କହିକି ପଠେଇଲେ, ସେ ଏ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ମନରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି. he slept on that chair. ତାପରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ why I could not go to attend that sick man, poor sick man. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଡଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, God you forgive me, I beg your pardon, ମାନେ ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି. ମୋର ଶରୀର ମତେ କହିଲା ମୁଁ ନୁହେଁ, because I was willing to go but my body did not allow me to go. My body spake ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋର ଶରୀର ମତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲା ନାହିଁ, ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ. ତାର ଅର୍ଥ he was overtired. My body spake ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ଯେ my body spoke me not to go. କହିବାର my body did not allow me to go. My body did not allow me to go. ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ. ମୋର ଶରୀର ଯିବା ପାଇଁ ଏଲା କଲା ନାହିଁ. Though I was willing to go. ଯଦି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ଏଲା କଲା ନାହିଁ. Because he was overtired. He slept on the chair, and therefore as he slept on the chair, he could not do his duty. Therefore he is asking forgiveness from God. He could not do his duty. ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ question, could not do his duty. Why he is asking a forgiveness from God? Because he could not do his duty, or he could not attend the poor sick man. Or he could not attend the poor sick man. कारण से गरीब सिक मैन को अटेंड करि पारिले नाही, से तांकर ड्यूटी करि पारिले नाही. किंतु ए दीटा जब ऑप्शन देइथिबो कहले आमे आंसर रे कोन हे जिवो जे he could not attend the poor sick man मध्ये आमे लिखि पारिबो. He knelt and leaning on the chair, आसे आंठी पड़ले आ चेयर रे कोन आउजी की he prayed and fell asleep. आ से कोन कले से माने सुई पड़िले, प्रार्थना कले आ सुई पड़ले. And the mood hour went from the fields. आउ से कीटपतंगर समय संध्यार समय से कोन चली गला. ओके माने चली गला, संध्या आसिला and stars began to peep. आउ तारा गुडी को कोन हला मिटी आलू देबा को लागिला. peeping means मिटी आलू देबा को लागिला. ओके एटा they slowly into millions grew. तारा गुडी को केमति बढिले, आस्ते होइतो संख्या रे बढिले, मिलियन माने होइतो. And leaves shook in the wind. आउ पत्र गुड़िक संध्या समय रे जेते राति गला संध्या परे से समय पत्र गुड़िक पवन रे कोन हला हलिला. shake रो past tense shook हलिला. And God covered the world with shade. आ परमेश्वर कोन कले रात्रि को कोन कले छाया रे आवृत कले. shade माने छाया. And whispered to mankind. एवं मानव जाति को से कोन कले अस्पष्ट स्वर रे कहिले. ओके वर्तमान में देखिबा how the writer describes the night. In the night, केमति से कहउछन्ते, what happened in the night? The stars grew in millions slowly. Who grew in millions slowly? Question मत आसीबो. नाही, what grew or who grew? The stars. Question मध्ये लेखियार मोर समय नै पेले. What grew in millions कले तमे stars में लेखियो, तमे से लेखियो what grew in millions कले stars देखिबो और moods देखिबो. कौन देखियो मूड्स देखियो कीट पतंग देखियो स्टार्स. who grew in millions गोटे हला द स्टार्स मूड्स आ कौन हला द बर्ड्स आ देखियो कौन द स्टार्स मूड्स बर्ड्स
the planets मन कर देते गोटे हला कोन the stars who picked the stars picked से माने they slowly into millions grew and leaves shook in the wind who saw the god covered the world into shade and whispered to mankind upon the time of sparrow चार जते बेले घर चटियार खिचिरी मिचिरी शब्दर समय आसिला केतेबेले माने सकाळे okay this indicates the morning hour the sparrow chirping time is a morning hour sparrow chirping time से देथिबो is evening night morning midday एंती देथिबो किंतु तुम कोन स्पारो chirping कहले सकाळ समय मन रखियो कि एटा परीक्षा रे आसीबो ओके ऑप्शन गुडा को लिखि पार नै एटा लिखला परे तुम ए करियो what is the sparrow chirping time upon the time of sparrow chirping when the smooth came once again सकाळ समय आसिला राति डेस्क्रिप्शन सरिला सकाळ समय पुणी आसला पुणी कीट पतंग गुड़िक आसिले द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर माने ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन पूरा सीधा चट्टान से ठिया हेले सकाळ हेबार माब्रोन माने हायो द मैन हैज डाइड माने सेही लोकटा मरि जाइथिबो व्हाइल आई स्लेप्ट ऑन द चेयर पीटर गिलिगन निजे कहउचंती जेतेबेले मो चेयर सुई पड़िले सेही समय से लोकटा कोन हे जाइथिबो मरि जाइथिबो Okay. He roused his horse out of its sleep and से तारो घोड़ा को सोईथिरा घोड़ा को से उठेले and rode with little care. आउ से माने carelessly चढ़ले. Little care माने कोन? Little care माने कोन? Little care माने carelessly. Okay. Little care माने कोन? Little care. Who rode with little care? Carelessly. तमे लेखिबो सेटा हला. He rode his horse little care. He rode now as he never rode. से ए प्रकार से घोड़ा चलेले जे ताहा केबे मध्य से प्रकार से चले नथिले बाय रॉकी लेन एंड फेन संत संख्या जगह रे पथुरिया जगह रे से प्रकार चलेले. The sick man's wife opened the door. तापरे sick man रो स्त्री कोन कला से कबाड़ खोली देला. Father you came again. खोली देला पर कहउछथि फादर तुमे आउ पुनर्बार आसिलो कि तार प्रश्न अर्थ होछि जे पीटर गिलिगन जीवा पूर्व जते बेले से रात्रि सुई थिले सेही समय रे तांको बदल रे केही गुटे से चुको जाइथिले तमे पॉइंट तळका में देखिबा जे गॉड तांकर चार एंजल को पठेइथिले पीटर गिलिगन को रूप रे सेही गरीब लोकन को देखा करिबा पाई बा गरीब लोकन को पाखो को एंड इज द पोर मैन डेड ही क्राइड से कहिले जे ए माने गरीब लोकटा कोन मरि गलानी की बोली से पचारिले ही डाइड एन आवर एगो से कहिले जे घंटाटे पूर्व से मरि गले द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीव स्वेड टू एंड फ्रो दुख रे से कोन कले ग्रीव माने दुख एपट से वर्ड अछि ग्रीव सेरा अछि दुख रे से कोन ले आगो को पछ को टू एंड फ्रो माने आगो को पछ को से कोन ले दोहलिले स्वेड माने दोहलिले when you were gone he turned and died एटा के कहउछि ये को तुमे जते बेले चाली गलो से बुली पडिले एवं मरि गले बोली सिक मैन रो वाइफ कहउछि काको पीटर गिलिगन को कहउछि आज मेरी आज बार पक्षी जेमति खुशी रे मरि जाय से प्रकार से मरि गले द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन he knelt him at that word से कथा सुनिबा क्षणे से कोन कले आंठु मारिले आ कोन कले सही वर्ड सुनिबा क्षणे से आंठु मारिले he who has made the night stars जे की रात्रि को रे माने तारका गुडी को तयारी करिछि निर्माण करिछि for souls who tired and bleed but ये माने आत्मा मानकर निर्माता sent one of his great angels down से तांकर गुटे महान जन दूतन को से कोन पठाइले टू हेल्प मी इन नीड आ मते असुविधा समय रे मोर आवश्यक समय रे मते हेल्प करिया पाई से तार एंजल को बा जन दूत को पठाइले बोली से कोन करूछन्ते प्रार्थना करूछन्ते he who तापर से गॉड को विषय रखुछन्ते he who is wrapped in purple robes ये कि पर्पल रोब रे घोड़ाई हुंती with planets in his care बा ग्रह गुडी को तार जत्न जते बेले रहे बा से जत्न ग्रह जुग रखंती माने से गुडे माने ए प्रकार द क्रिएटर had pity on the list of things जा से मो परि गोटे अति क्षुद्र लोकन को प्रति से कोन थिले माने कोन दुख माने दुख कले आसली पापने चेयर जेते मु चेयर सुई थिले सेही समय रे जे कि गुटे सृष्टि करता मो परि क्षुद्र लोकन को प्रति से कोन कले अवगत हेले ओके ही पेड अटेंशन ऑन मी
ओके बोली से कहते पीटर गिलिगन प्रश्न जाक अच्छी व्हाई वाज फादर गिलिगन वरी फादर गिलिगन कहीं माने व्यस्त थे व्यग्र थे सेटा को क्वेश्चन लिखिबो कौन वाज ही ओनली टायर्ड फिजिकली और आल्सो एग्जॉस्टेड मेंटली एटा तुम लिखिबो जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल फ्रॉम द म कहि छै जे पीटर गिलिगन वाज बोथ फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली एग्जॉस्टेड बोली लिखिबो से शारीरिक एवं मानसिक भाव से कोन हे जाइथिले क्लांत हो जाई छंती केमती आज ही वाज फिजिकली टायर्ड he was nodding on the chair why did he seek forgiveness from God से परमेश्वर ठार काहे कि क्षमा प्रार्थना करूछंती काहे कि because he could not attend the sick man what type of man does this prove माने कोन he is माने he is a religious as well as a what devotee of God okay dutiful man मध्ये हम लिखि पारे two devotions okay he माने how was the night peaceful quiet turbulent restless the night was peaceful and restless okay peaceful and being expression from the poem to support your answer clue peep slowly as the stars peep they grew and slowly eta सब बुझौछि restless थिला night why has the night been described so contrast between Peter Gilligan and when awake and when asleep night को काहे कि night ta restless थिला because Peter Gilligan as the night was restless Peter Gilligan was also restless what was the reaction of Father Gilligan when he woke up from the deep sleep state why he felt so when he woke up from जेतेबेले Peter Gilligan सुई कि उठिले तार reaction प्रतिक्रिया कोन होला because he remembered that poor sick man okay well poor sick man and he felt that he could not his duty he could not attend the poor sick man okay term 6 bring out the meaning of the expression he rode now as he never rode means he rode now as he never rode means he rode carelessly that find the expression that so Father Gilligan concern from people under his care at least for expression eta likhibo why did sick man's wife say father you came again sick man कर wife काहे की कहला जे father तुमे आउ थोड़े आसिलो बोली because आज in the absence of Peter Gilligan another angel or the angel of God went to the sick man's house in the in the form of father okay in the form of father but father ko upore okay in his figure in the figure of Father Gilligan an angel went to attend the sick man therefore when Peter Gilligan went in the next morning to meet the sick man or to the house of sick man the wife of sick man said father did you come again why you came again पुनर्बार तुम आसिलो कि बोल से कहूछि who came to the sick man before his death कि आसले the one of the angels of great angels of God why to attend the poor sick man in place of Father Gilligan what made Father Gilligan kneel and pray माने ए word गुडी को okay he knelt with the words of the sick man's wife he knelt and prayed what were his words of gratitude so तारो words of gratitude कौन जे कृतज्ञतार जे least person मो परि गोटे क्षुद्र लोकक प्रति प्रभु तुमे दया कलो he who made the stars and planets in his care एगुडा सब तारो वर्ड जाको लिखियो ओके डियर स्टूडेंट्स तमे एगुडी सब फॉलो करियो 12 13 14 एगुडी देखिबो आ विशेष करी कोन शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को आसु अछि प्लस 2 परीक्षा प्रेजेंट पोएट्री रो एगुडी को माने विभिन्न ए जो प्रश्न एटा जेहेतु कविता बुझिलो से अनुसार तमे लिखिबो ओके वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास